evening, everyone. Welcome to Diabetes Bytes, an initiative of the RSSDI to share with you all more and more about the activities and initiatives undertaken by RSSDI, which is Asia's largest association of diabetes care physicians, and importantly, to create more diabetes awareness and inform you about related aspects. आज के इस हफ्ता के सेशन में हम सवाल जवाब और जवाब सवाल द्वारा ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग यानी खून में ग्लूकोज की मात्रा का नाप उसके बारे में बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं और आपको कुछ पता होगा उसके बारे में और बहुत सारी शंकाएं भी होगी और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी सब शंका दूर करेंगे. So please join me in welcoming a very special guest who we deeply admire and take inspiration from, because they are not only experts but experts who have dedicated a very, very good part of their time to patient education and awareness. So may I welcome my co-host Dr. Faraz Farishta from Hyderabad to welcome and introduce our guests for today. Thank you, Dr. Purvi, for that warm introduction. And जैसे आपने कहा, आई थिंक आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आईडीएफ का थीम भी है, एक्सेस टू डायबिटीज केयर, जिसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है ग्लूकोज मॉनिटरिंग. और इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए आज हमारे पास मैं कहूँगा तीन बहुत मेरे वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड, सीनियर कोलीग्स हैं, जिनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता. तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील गुप्ता, वो आरएसएसडीआई के ट्रेजरर हैं, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ डिप्सी. एंड एक बात तो मैं उनसे कभी अलग से भी पूछूंगा और मे बी स्क्रीन पे भी कि हम सबकी एज बढ़ रही है, आपकी रुक गई है, इसका राज हमें एंड में बताना जरूर. और हमारे साथ हैं डॉक्टर जयप्रकाश साई, मेरे बहुत क्लोज कलीग हैदराबाद से. ही इज आरएसएसडीआई टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स मेंबर, consultant Apollo Sugar, and very active when it comes to diabetes. And then yes, we have the enigmatic Dr. Sanjay Reddy, RSSDI EC member, consultant diabetologist from Fortis, Bangalore. So without any delay, over to you, Dr. Sanjay. Thank you, Dr. Purvi and Dr. Faraz, for this warm word. I welcome Dr. Sunil Gupta and Dr. Jayaprakashsai, close friends of mine, and I see Dr. Sanjay Agarwal, our secretary, being here, and then thank Dr. Vasant Kumar, Sanjay, and the previous person, Vansi, who was instrumental for this program. So, with these few words, and we all know monitoring is an important and integral part of management of type 2 diabetes, type 1 diabetes, gestational diabetes, you name it. Now, we have two good proponents of patient education. They are passionate about patient education always, and I see them very frequently trying to do their own best, trying to be involved in patient education on and off very regularly. So with this, I hope I'm very close on it. So with this few words, I start off with my first question, and this I would like to ask Dr. Sunil Gupta. Doctor, I hope it is. Sorry. Sanjay, we are unable to. Yeah. Is there an echo? Yeah. Now it's okay. I'm sorry. I tried to use the iPods and then something happened. Now, the first question to you, sir, is now the most common thing for many people is how often should we check blood glucose in normal patients who are at risk for diabetes? I feel Sanjay, congratulations once again, RSSDI's Dr. Vasant Kumar, Sanjay Agarwal, and of course Dr. Bansi, and everyone, Purvi and everyone. Thank you for this honor. Now, one should know what this monitoring is. Monitoring is the blood glucose. Once you have diabetes,
हम सभी लोगों को जिनको भी डायबिटीज है, पहला चीज कि हर मधुमेही के घर में ग्लूकोमीटर होना मस्ट है. If you have been defined or you have been labeled as a person with diabetes, you should by default be having. Now अभी सभी लोगों के संजय और जया also and everyone will agree with one point, पूर्वी also, कि अभी जब से कोरोना आया तब से सबके घर में पल्स ऑक्सीमीटर तो आ गया, थर्मामीटर भी आ गया, कुछ लोगों ने एग्रेसिव होकर बीपी एपरेटस भी ले लिया, बट स्टिल पीपल विद डायबिटीज हैव नॉट had their glucometers at home. तो आज भी मेरे पास एक ओपीडी में मधुमेही आए थे, उनको 12 साल से डायबिटीज है, उसमें एक टाइम इंसुलिन भी ले रहे हैं, गोलियां भी ले रहे हैं, बट जैसे कि उनके पास ग्लूकोमीटर नहीं है इसलिए वो टेस्ट नहीं करते. आई फील हर मधुमेही के घर में they should have a glucometer with them and they should make it a point that they should be monitoring blood glucose on a very very regular basis. Now Sanjay's question is very very specific कि यदि आपको डायबिटीज है तो आपको ग्लूकोमीटर किस फ्रीक्वेंसी से करनी चाहिए. यदि आप सिर्फ डाइट, अब अलग अलग सेट ऑफ मधुमेही रह सकते हैं. एक ऐसा रहेगा जिसको सिर्फ डाइट एंड एक्सरसाइज चालू है और उसके ऊपर भी उसका फास्टिंग, पोस्टप्रेंडियल और HbA1c शुगर अच्छा वाला कंट्रोल है, तो ऐसे व्यक्ति ने 15 दिन में एक बार भी किया ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, फास्टिंग, पोस्ट मील, तो भी चल जाएगा. जो लोग स्टेबल हैं, गोलियों पर हैं, मे बी 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, यदि उन्होंने हफ्ते में भी एक बार फास्टिंग, पोस्टप्रेंडियल, ब्लड ग्लूकोज किया तो उनको भी चल जाएगा और वो ऐसा महीने में 4 बार अपना टेस्ट कर सकते हैं यदि अपना शुगर कंट्रोल चल रहा है. तो जिन लोगों का शुगर अनकंट्रोल्ड है उनको ज्यादा फ्रिक्वेंटली करना पड़ता है. जो कुछ लोग मधुमेही जो टाइप 2 डायबिटीज वाले हैं, वो लोग, कई लोगों को 10 साल 12 साल के बाद में इंसुलिन लग जाता है तो वो एक टाइम इंसुलिन लेते हैं, बाकी समय गोलियां लेते हैं. ऐसे लोगों को एटलीस्ट फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज डेली करना चाहिए और पोस्टप्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज इंटरमिटेंटली करना चाहिए, मे बी ऑल्टरनेट डे और मे बी वंस इन 3 डेज ये करना चाहिए, जिससे कि अपना शुगर वो मेंटेन करके रख सके और अपना एक स्टैगरिंग मेथड बोलते हैं उसको, वो भी कर सकते हैं. Last but not the least, those who are on multiple doses of insulin, twice a day or three times a day, they should monitor blood glucose at least twice a day or sometimes 3 times a day. और जिन लोगों को एग्रेसिव कंट्रोल लगता है, जैसे प्रेगनेंसी डायबिटीज, उसमें हम लोगों को कई बार 6 बार 7 बार भी टेस्ट करना पड़ता है, फास्टिंग, पोस्ट ब्रेकफास्ट, प्री लंच, पोस्ट लंच, प्री डिनर, पोस्ट डिनर, और रात को 3 बजे भी मॉनिटरिंग करना पड़ सकता है. जिन लोगों का मल्टीपल डोज इंसुलिन चालू है या जो लोग प्रेगनेंसी के लिए या तो प्लान कर रहे हैं या जो प्रेगनेंसी डायबिटीज में है, उन लोगों को ज्यादा मॉनिटरिंग करनी पड़ती है. जो टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे हैं हमारे, जिनको अक्सर बेसल बोलस थेरेपी 4 बार इंसुलिन लगता है, ऐसे बच्चों ने एटलीस्ट दिन के 2 बार टेस्ट तो करने ही चाहिए. और यदि हमारी इकोनॉमिकली यदि ऐसा लगता है कि ये फिजिबल नहीं है या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 टेस्ट पर डे, उसको आप स्टैगरिंग मेथड में संजय कर सकते हैं कि यू कैन डू 1 डे फास्टिंग, 1 डे प्री लंच, सेकंड थर्ड डे आप यू कैन डू पोस्ट लंच, 4th डे प्री डिनर, 5th डे पोस्ट डिनर, 6th डे रात को 3 बजे और संडे का एक दिन का छुट्टी. सो यू कैन हैव एटलीस्ट 6 days इन 6 डिफरेंट टाइम में स्टैगरिंग मेथड में भी आप कर सकते हैं. तो दिस हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड. देयर कैन नॉट बी अ कॉमन स्टेटमेंट और कॉमन रिकमेंडेशन कि आपने 2 बार करो या 1 बार करो या हफ्ते में करो. जो जिस व्यक्ति को ज्यादा पोस्ट सर्जिकल है, पोस्ट आईसीयू स्टे है, ऐसे लोगों को ज्यादा मॉनिटरिंग, ग्लूकोज ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, जो सेल्फ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं, वो करना चाहिए. Thank you. Yeah. Dr. Sunil, sorry. You can go ahead. You can go ahead. Yeah, इसके अलावा you have also CGM and all. I feel there will be some question on CGM. So maybe technology person we have Dr. Jana, he will speak. Sanjay, if there anything else you want to add, you can certainly add this. I'm not going to add anything. I'm just going to send you the questions. Thank you for answering that. Most of them, they're different diabetics with various duration of diabetes, only on diet and exercise and oral drugs, single dose insulin, multiple dose insulin, and so on, based on the severity of diabetes duration, need to monitor more frequently at home. Dr. Jayaprakash, I have a question for you. I'm a normal individual. I don't have diabetes, but I'm at risk for diabetes. I'm not the ideal BMI, I'm an Indian. Third, I have family history of diabetes. How often should I check my blood glucose? Thank you, Dr. Sanjay, and thank RSSD team for giving me this opportunity. I think as Dr. Sunil said that a glucometer in home is very important, because in a family, at least a father, mother will have.
as Dr. Sanjay asked, who is at risk for diabetes, having a strong family history. If he's above 30 years old, I think at least 15 days once, if he checks his blood sugar in a monthly once, just to have a random blood sugar. If he is having high risk factors like family history, stressful lifestyle, and obesity, I think checking the blood sugars oftenly, maybe in 15 days once or in a monthly once, depending on the high risk group. Because nowadays we see diabetes, I think recent article also has been published. We are seeing it at the age of 30 and even below. Diabetes risk is there. I think a regular monitoring, at least every month, not at least bi-monthly checking with a glucometer, a random blood sugar also will suffice. And having a glucometer in home itself will give you more info, because पेशेंट वेट करने की जरूरत नहीं उनको सिम्टम्स आने के लिए. एटलीस्ट उनको रिस्क फैक्टर्स है तो वो रेगुलर, सपोज ही हैज एनीथिंग गिडीनेस or any change in his general body, any factors like he's feeling something weakness, a generalized weakness, or he's losing weight, or something unknown, unnoticed symptoms are there, he can check his blood sugar as a random blood sugar. Then subsequently he can get his blood test done and diagnose diabetes. A routine having a glucometer is very important. Thank you, Dr. Sai and Dr. Sunil Gupta, for emphasizing on the fact on the importance of home blood glucose monitoring, one, and second, enlightening us on how and when normal people should check their blood glucose, and a recommendation to follow up at the lab once in 6 months or once a year to really quantify or get an A1C done along with the blood glucose to find out if they're diabetic, pre-diabetic, or they're normal. This also encourages patients and probably we can diagnose diabetes earlier. The earlier we diagnose, earlier treat, we can track them, probably their complication rates will be better. Now, I have a question for Dr. Jayaprakashsai Jana before I go back to Dr. Sunil Gupta. Dr. Sai, you see a lot of type 1 diabetes patients and understand you do a lot of work along with them. So, type 1 diabetes patients in our country are basically, for the knowledge of viewers, type 1 diabetes is predominantly a disease of children and young adolescents, which onset is between children. Now, we need to, how often do you think in a country with resource poor setting, Dr. Sunil Gupta did mention staggering blood glucose monitoring. How often do you think these children should measure the blood glucose? And what is your opinion about it? Yeah, there's a very important question in low socio-economic status, because in type 1 diabetes, first, I think every type 1 diabetic children in India should have a glucometer, which is very important. And at least if government and some states, they provide a glucometer and strips. Some states, we don't have that access, because access to diabetes care, which is the theme for World Diabetes Day also. I think suppose he doesn't have much of access to glucose strips, I think on a basis like a fasting blood sugar, at least he checks one day fasting blood sugar, and next day he checks his before lunch, the next day before dinner, the next day bedtime. So in a weekly, I'm talking about low socio-economic group where they don't have access to a lot of strips. So at least once, daily once he learns, at least for 1 week, he checks 3 times, 4 times in a day. And after 1 week, second week, the patient learns himself. He self-educates that dose adjustments. Then subsequently from third week, second week, depending on his blood sugars fluctuations like low sugars or high sugars, any symptoms, I think a regular monitoring also helps. Thank you, Dr. Jayaprakash, for telling us the importance of staggering blood glucose. I know the ideal thing is to probably check 7 to 8 times a day, which is not, it's an ideal scenario or the textbook description of checking blood glucose. But in a resource poor setting, in trying to look at, understand blood glucoses and their variability, the staggering, especially in a low socioeconomic setting like us, is very helpful. Over to you, Dr. Sunil Gupta. I have a question for you. Most of my patients come back and say, "Sir, ये झूठ बोल रहा है machine. Machine झूठ बोल रहा है sir. ज़्यादा दिखा रहा है, कम दिखा रहा है." Now, जो ग्लूकोमीटर कम दिखाता है वो ज्यादा अच्छा, जो ज्यादा दिखाता है वो कम अच्छा. सर ये इसको मैं बिलीव नहीं करता. ये कंपनियां ठीक नहीं है. So these are some of the things which you face in practice.
myths about a glucometer, and these myths come back to the clinic, and they say, and the belief, how do we reinforce the belief on the home blood glucose monitoring? And what is your suggestion to all the people who are listening on the questions which थैंक यू संजय. इट्स वन ऑफ द, आई फील, यदि जब भी हम लोग मॉनिटरिंग की एंड ग्लूकोमीटर की बात करते हैं तो सबसे बर्निंग क्वेश्चन इज दिस ओनली. एंड you organize any n number of education program, but this question is going to be 100% there in your portfolio from the people with diabetes side of from their point of view. Now let me make this story very simple. See, every one of you जो लोग यहाँ देख रहे हैं इस समय, ये जो हम उंगली से ब्लड लेते हैं ये कैपिलरी ब्लड कहलाता है. जो हम लोग लैब से ब्लड लेते हैं वो वीनस ब्लड कहलाता है. यदि हम थेरेटिकली बोलेंगे तो ये कैपिलरी ब्लड का जो शुगर है वो रिलेटिवली 10 to 20% ज्यादा रहेगा वीनस सैंपल से, क्योंकि हमारा ब्लड आर्टरी से पहले कैपिलरी में जाता है, फिर वहां यूज होकर अल्टीमेटली वेन में जाता है. तो 10 to 20% थेरेटिकली रहेगा. और इसीलिए जब हम पहले जो ग्लूकोमीटर्स आते थे आज से 10 साल पहले तक के, वो यहाँ पर कैपिलरी ब्लड का शुगर देते थे, यहाँ पर वीनस ब्लड हमको जो लैब में करने को मिलता था. नाउ nowadays most of the glucometers, almost all good quality company का जो glucometers हैं, they are plasma calibrated glucometers. So even if आप यहाँ का जो शुगर ले रहे हैं वह भी प्लाज्मा का ही रिपोर्ट को सॉफ्टवेयर में एडजस्ट करके देता है कि प्लाज्मा कैलिब्रेटेड ग्लूकोमीटर्स है. और इसीलिए ग्लूकोमीटर और वीनस सैंपल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता है. फिर भी forget about glucometer versus venous blood, you take out any two samples from vein, एनी टू सैंपल आप 5 लैब में दे दीजिए, एक आप नागपुर में दीजिए, एक आप बॉम्बे में दीजिए, एक न्यूयॉर्क में दीजिए, एक टोक्यो में दीजिए, एक सिडनी में दीजिए और एक मे बी मॉस्को में दे दीजिए, और आपका 6 सैंपल आपने अलग अलग वीनस भिजवा दिया, उसमें भी 10 to 20% का वेरिएशंस आ सकता है. ग्लूकोमीटर भी वैसा ही है, 10 to 20% का वेरिएशंस आ सकता है. ना ये जो वेरिएशंस हैं, यू कैन नॉट बी साहब मेरा 151 वहां आया, यहाँ 157 आ गया, तो उसको हम वेरिएशन नहीं बोलेंगे. दूसरा चीज, आपका जो स्केल होता है जिस पर कि ग्लूकोमीटर्स अप्रूव किए जाते हैं एफडीए के द्वारा, वो उसमें 80 to 120% का वेरिएशंस रहता है. The glucometer will be approved only if the sensitivity with the control with the standard is between 80 to 120%. That means नेगेटिव साइड में 80%, अबव साइड में 120%. तो यदि इतना वो मैनेज करते हैं, कहने का मतलब ये है कि 10 to 20% का वेरिएशन रह सकता है. Now most important Sanjay here part is that I feel you must have gone through that paper long back, कि यदि आपका शुगर 80 to 220 के बीच में है तो वेरिएशंस कम रहेंगे, 10 than 10% भी रह सकते हैं. परंतु यदि आपका शुगर 400 है या इधर आपका शुगर 50-60 है तो वेरिएशंस आपके 15-20% भी रह सकते हैं. खासकर हायर शुगर जब आता है तो आपको लगेगा साहब उसमें तो मेरे को 370 आया, इधर तो मेरे को 420, 425, 450 आ गया. तो ये जब जैसे जितना हायर ब्लड शुगर रहेगा वेरिएशन अप टू 20 और इवन समटाइम्स 25% रह सकते हैं. जब आपका 80 to 120 के बीच में रहता है तो वेरिएशंस कम रहते हैं और लेस देन 10% भी रह सकते हैं. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हियर इज एवरी ग्लूकोमीटर, यदि हमने उसका स्ट्रिप बराबर मैनेज किया, अब हर ग्लूकोमीटर के ऊपर स्ट्रिप में लिखा रहता है उसका एक्सपायरी कि इसको यूज करने के लिए 3 महीने में खत्म करना चाहिए, कुछ में लिखा रहता है 6 महीने में. हमारे यहाँ मधुमेही लोग साल भर चलाते हैं, वो हमको इंपॉर्टेंट है. उसको जब भी आप ग्लूकोमीटर से स्ट्रिप का डब्बी खोलते हैं, जब उसमें मल्टीपल स्ट्रिप्स रहती हैं तो कई बार आप खोल के ऐसा रख देते हैं और उसमें ह्यूमिडिटी एंटर हो जाता है, इट में अफेक्ट दी क्वालिटी ऑफ द स्ट्रिप्स. सो क्वालिटी ऑफ द स्ट्रिप्स, कई बार किसी ने गलती से उसमें स्पिरिट गिर गया एक ड्रॉप भी, तो वो स्ट्रिप को स्पॉइल कर देता है. एंड वी समटाइम्स से यार इसको वेस्ट करने कैसे करेंगे, इसलिए हम करते हैं. दूसरी चीज, समटाइम्स यू गो ऑन प्रेसिंग दी फिंगर, आपका इनएडिक्वेट, ठंडी के दिनों में अक्सर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, आपका ब्लड अच्छे से निकलता नहीं है, तो आप फिर यू गो ऑन प्रेसिंग एंड दैट में ऑल्टर दी प्रेशर इफेक्ट के कारण ब्लड जो आता है आपका वो डाइल्यूट हो सकता है. तो हमेशा जब भी आप प्रिक करते हैं तो उसको अराउंड द फिंगर करें. लोगों को अक्सर आदत है कि सेंटर में करते हैं प्रिक, जब भी आप लैंसेट से प्रिक करते हैं तो उसको अराउंड द फिंगर करें, जिससे कि जो आपके कैपिलरी का या वेन का कोर्स है तो आपका ब्लड इजीली आएगा. सेंटर में करेंगे तो आपको जोर से प्रेस करना पड़ेगा. तो इस तरह से ग्लूकोमीटर अकेला इंपॉर्टेंट संजय नहीं है, यहाँ हम किस तरह से उसको कर रहे हैं, स्ट्रिप का हमने मेंटेनेंस कैसा किया है, कहीं हमने उसको खोलने के बाद 1-1 साल तक यूज तो नहीं कर रहे हैं,
ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ ग्लूकोमीटर आते हैं जिसको 1 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर हमको यूज करना पड़ता है स्ट्रिप्स को, तो उसके बेसिस पर हमने काम करना चाहिए और अच्छे क्वालिटी के ग्लूकोमीटर्स लेंगे तो शायद ज्यादा रिलायबल हमको रिपोर्ट्स आएगी। Thank you, Dr. Sunil Gupta, for that wonderful expression of the most important thing. Sai has something to say. Please go ahead, and then I can conclude this statement. Over to you, Dr. As I agree with Dr. Sunil, generally I tell my patients when they go to the lab with a calibrated glucometer also, they will go to the lab. Same time they will give the sample and they will check their blood sugar also. So when we get the report, they compare with this blood glucose versus the lab report. So they will have a 10% variation. So they will have an idea. They are seeing the report and the glucometer reading. So subsequently, so that makes them understand that the accuracy of the glucometer. Yes, thank you, Dr. But Sai, more and importantly, Dr. Sanjay, sometimes and Dr. Sanjay, Yeah, Sanjay, go ahead. sometimes you have a small places where your labs are not well calibrated. See, any instrument you open in the lab have to have a calibration done on a regular basis. तो यदि हमने अच्छा कैलिब्रेशन नहीं किया, उस अच्छी लैब की मशीन अच्छी कैलिब्रेटेड नहीं है, या आपकी लैब का जो रिएजेंट है उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, कभी टेक्नीशियन ने आपका ब्लड निकाल के रख दिया और वो 2-3 घंटा 4 घंटा उसको प्रोसेस नहीं किया, तो भी आपका ब्लड जो आपका लैब में निकाला हुआ शुगर कम होते चला जाता है। यदि आपने सवेरे 8 बजे फास्टिंग सैंपल निकाला और उसको प्रोसेसिंग आप 12 बजे 1 बजे करेंगे, जब पूरा दूसरा भी सैंपल आ जाएगा तो उसका रीडिंग कम होता चला जाता है। तो इवन दैट वी शुड नो, द लैब शुड आल्सो डू इन अ प्रॉपर वे। Thank you, Dr. Sunil Gupta and Dr. Jayaprakashsai, for busting the myths on usage of glucometer. Please first check your blood. Check your blood glucose. It's your own blood. The meter is your own. You need not go to the lab. First, this is what I tell my patients. It's your own blood, your own glucometer in front of in front of you. The most important thing is to train yourself correctly. Get trained properly. Please use the strips within the expiry period. Please make sure you know the right technique. नहीं तो दोबारा जाके आपका क्लिनिक में मदद मांगे आपके डॉक्टर से, वो आपको सही सिखा देंगे कैसे ही टेस्ट करना है. So then their myths are not there. Well, another question which comes in is to Dr. Sai is one of the most frequent thing is blood glucose. When do a patient, I check my blood glucose. It's like me looking at a mirror. I check my blood glucose. Dr. Sunil has given me treatment and you started me on oral drugs. And when do I call you? When is that emergency alarm button where I said, now I need to seek help? My readings is this much low or this much high. What do you suggest to your patients when they should seek help when they find these readings? Thank you, Dr. Sanjay. I think a very important question. As you asked that who are on oral medication in subject to even insulin, I think the patient is regularly checking because he knows that regular checking with a glucometer to understand his dietary patterns as well as relation to physical activity. Suppose he finds something, he's checking with his blood sugar and is getting sugars above 300, even if he gets a blood sugar less than 100 or even below 100 mg per deciliter. I think even suppose the patients have symptoms, frequent urination or giddiness or some frequent symptoms, I think he need to seek medical help. If he gets high sugars and low sugars, I think he need to whenever your glucometer shows something called high means it's more than 450, it could be 1000. So please make sure that high, please go back to your doctor. Low and your hypoglycemic, these two, and please ask your consultant physician what your targets could be, because they can differ from age to age. Preset these targets, and if you find consistently, don't get alarmed by one value, but very high and very low values, please be alarmed. But if you have these targets all the time being higher, seek help earlier so that appropriate therapy can be initiated and we can take it forward. Dr. Sunil Gupta, sir, one more question for you. You all know frequent monitoring of blood glucose, keeping blood glucose levels very well under control are going to reduce risk of both micro complications because of diabetes. Is monitoring blood glucose alone enough in the diabetic patients? For the advantage of all the people listening
what are the tests you recommend to your diabetic patients every year as part of screening for complications? Apart from blood glucose, can you please elaborate on that? It Yes. So also forms first, an interesting part of monitoring for blood very, for a diabetic very, patient. very interesting, and it's very useful question, I'll say, for everyone. One is that fasting postprandial blood glucose we have said. Then another marker is HbA1c, which gives you average sugar of last 3 to 4 months. So one should always do this test at least every 4 months, and minimally at least twice in a year. So you should try to keep your HbA1c less than 7. And those who are young people, who are more who have longer lifespan, young people without any other complications or comorbidities like kidney, heart or any other procedure, एकदम यंग आदमी है जिसका एज और ज्यादा समय तक जिसको स्वस्थ रहना है, ऐसे लोगों के लिए हमने उसको 6.5 रखा हुआ है. जो एल्डरली लोग हैं, जिनका एज ज्यादा एज है, जिनको किडनी का या हार्ट का कुछ बड़ा प्रॉब्लम आया हुआ है, ऐसे लोगों ने 7.5 तक भी रखा HbA1c, इवन अप टू 8 भी रखा तो भी चलता है. बहुत छोटा बच्चे हैं टाइप 1 वाले, उनको भी हम अप टू 7.5 एंड 8 एक्सेप्ट करते हैं HbA1c. So apart from that, SMBG, HbA1c should be done ideally 3 times in a year and minimal at least twice in a year, to be kept on an average less than 7 for every one of you. Third is you should also check your blood pressure on a regular basis with your doctor and try to keep it less than 130/80. Lipid profile is next test, which is to be done once in a year, which actually Sanjay wanted me to speak on. That lipid profile, कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट हम लोग बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है LDL कोलेस्ट्रॉल, जो हमको लेस देन 100 रखना चाहिए. यदि आपको कहीं हार्ट का प्रॉब्लम या ब्रेन अटैक या हार्ट अटैक आ चुका है या दूसरा कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है, पैर के खून के नलिया में ब्लॉकेज है, तो आपको लेस देन 70 रखना चाहिए, लेस देन 70 LDL रखना चाहिए. तो मैंने बताया A1C, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल विच इज LDL कोलेस्ट्रॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट. अदर कोलेस्ट्रॉल भी है जिस पे हम लोग बाद में कभी बात करेंगे. फोर्थ आता है हमारा, हमने एक बार थायराइड का भी टेस्ट करना चाहिए साल में. किडनी का टेस्ट एक करना चाहिए जिसमें हम लोग क्रिएटिनिन करते हैं, और एक यूरिन में माइक्रो अल्बुमिन का टेस्ट करते हैं कि यदि आपके यूरिन में अल्बुमिन पास हो रहा है, दैट मींस कि आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल भी रहा तो भी यदि यूरिन में से अल्बुमिन जा रहा है तो वो बताता है कि आपके शुरू डायबिटीज में दूसरे यदि कोई कारण नहीं है तो किडनी का डैमेज शुरू हो गया है. यदि किडनी का डैमेज बहुत अर्ली स्टेज में शुरू हुआ या नहीं पता लगाना है, तो उसके लिए यूरिन में यू हैव अ टेस्ट व्हिच इज कॉल्ड एज माइक्रो अल्बुमिन टेस्ट, एंड दिस अगेन हैज टू बी डन once in a year. So you have kidney, then you have a heart checkup. That is, every year you are supposed to get your heart checkup done. ECG should be as a routine, and if you have some symptoms and if you have a very strong family history, I'll go one step ahead and I'll say at least once in 3 years you should get your treadmill or echo done and go to a cardiologist. Just rule out any other thing. So cholesterol, blood pressure, ECG, renal profile, किडनी प्रोफाइल एंड इवन पैरों की जांच. पैरों की ब्लड वेसल्स में जो ब्लॉकेज आते हैं उसके लिए हमको वेस्कुलर डॉपलर करते हैं. पैरों की जांच करना चाहिए साल में एक बार. पैरों की जो नर्व्स होती हैं उस पर हम लोग न्यूरोपैथी की जांच करते हैं कि यदि आपके पैरों में न्यूरोपैथी आ रही है तो उसको हम लोग हाई रिस्क फुट बोलते हैं. फिर उसमें भी हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स आपको बताते हैं जिससे आपके पैरों में असर होने के पहले या पैरों में कोई अल्सर और कुछ होने के पहले ही हम उसको बचा सकते हैं. Sanjay and Jana and Dr. Sanjay will agree on this particular point that 85% of the foot which are amputated, they can be saved by simple educating people how to take care of your feet. यदि हमने foot education, so there are diabetes educators, now there are also pregnancy one में educators, nephrologists have also started educators, and now you have the diabetic foot educators and podiatry एक अलग ब्रांच है जो आपको फुट केयर सिखाती है. तो इस तरह से आपने साल में एक बार, मेरे ख्याल से मैंने, हाँ, आंखों की जांच, रेटिना इवेल्युएशन इज अनदर थिंग व्हिच हैज टू बी डन वंस इन अ ईयर. क्योंकि आपका जो आप बोलते हैं हमेशा चश्मे का नंबर मैंने चेक कर लिया, वो वहां पर उन्होंने मेरा आंख जांच कर लिया, वो आपका चश्मे के नंबर वाला आपका रेटिना चेक नहीं कर सकता. आपको आधा घंटा दवाई डाल के बैठना है, बड़े कैमरे से फोटो देखना है कि आपका फंडस बराबर है या कर रहा है नहीं कर रहा है. छोटे कैमरे भी आजकल आ गए हैं, बट रेटिना का इवोल्यूशन आपके डॉक्टर अच्छे तरह से कर सकते हैं, और वो भी हमको साल में एक बार आंख के डॉक्टर. इसके अलावा डेंटल चेकअप भी होना चाहिए संजय, जो साल में एक बार डेंटल चेकअप भी करवाना चाहिए. तो इस तरह से ये मल्टीपल चीजें यदि हमने साल में कराए. अब आप लोग बोलोगे मेरे को साहब ये तो बहुत खर्चे वाला काम है,
तो आपने बोल दिया हार्ट भी कराओ, किडनी भी कराओ, लीवर भी कराओ, कोलेस्ट्रॉल भी कराओ, थायराइड भी कराओ, लिपिड प्रोफाइल भी कराओ, पैरों का जांच कराओ, आंख का जांच कराओ। ये तो बहुत महंगा टेस्ट है। तो हमने उसको कैलकुलेट करने को देखा है कि यदि आपने रोज का 10 या 20 रुपए भी रोज का 10 रुपए भी रोज का रख देते हैं अपने शरीर के लिए अलग से, तो भी आप ये सब चेकअप इतने पैसे में आराम से करा सकते हो। यू हैव टू जस्ट स्पेंड 10 रुपीज पर डे फ्रॉम योर पॉकेट। यदि आप प्राइवेट में करा रहे हैं, कोई ट्रस्ट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल कराएंगे तो शायद एवरीथिंग विल बी डन इन मच मोर चीपर rates. What I want is what every person with diabetes should get. It is like a, see Sanjay, I'll give you another thing. It's very important area of discussion. मैं अपने मधुमेहियों को बोलता हूं, I don't say them patient, I don't call them patient. What I tell them is, आप अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हो, आप अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। यदि आपका हस्बैंड वाइफ घर में बच्चे किसी को भी डायबिटीज है, तो उसका बर्थडे का गिफ्ट सबसे अच्छा ये रहेगा कि ये देखो आपका मैंने आंख का जांच किया, किडनी का जांच किया, हार्ट का जांच किया, लीवर का जांच किया, कोलेस्ट्रॉल का जांच किया और पैरों का जांच किया, आपका ये सब का सब कुछ नॉर्मल है। That is the best gift to your spouse or your friend or your well-wisher to whom you want to live with diabetes healthy and happy. So Thank you, please Dr. Sunil. stop giving saris, please stop giving kapadas, please stop giving ghadis and wristwatches. Give this health gift to everyone once in a year. उसी बहाने आपका टेस्ट हो जाएगा और आपका एनुअल चेकअप हो जाएगा. And what can be the better gift than this? Jaya, tell me that. Thank you very much, Dr. Sunil. That was very encouraging to listen to and say, okay, get an annual checkup. Make sure that you're free from complications because of diabetes, or identify them earlier so we can treat appropriately. Check your eyes, your kidneys, your cholesterols, your heart, your feet. Get yourself again educated. Do an A1C at least 3 to 4 times a year, if not possible twice a year. But make sure you keep them well within control. So, and also let's look at a birthday gift as a checkup for somebody with diabetes. Thank you very much. That was very nice. I think we're running out of time. One last question to Dr. Jai. Dr. Jai, we have a lot of other devices which have come in, like continuous glucose monitoring. Then we have many of these continuous glucose monitoring. Are they for everybody? Or you want to choose these continuous glucose monitoring are only for a set of people who may benefit with it and take maximum? Who, according to you, are ideal people to undergo continuous glucose monitoring for better management of diabetes? Yeah, I think good question, Sanjay. I think I agree with Dr. Sunil has covered that monitoring of a diabetic patient. He has shown very great example of celebrating for good health. Dr. Sanjay, I think CGM is very important, especially even I think every diabetic patient should get subjected at least for, because we know that CGM Guardian Connect is there. We have flash monitoring, because in 2 weeks it gives you some insights about his dietary patterns, his medications and his exercise patterns. He can understand, because glucometer gives you at the time of what is his reading, but the continuous glucose monitor will give us every 15 minutes of reading a 2 weeks report. Will give the complete picture of his. You can change. Sometimes we see in real practice, a patient comes to us, gives a blood test, and subsequently he'll have a masala dosa, and he'll check his blood sugar, and post lunch will be 300, 340. Suppose if he has this continuous glucose monitor, he'll understand that this day I had this food, this day this food, this day I have done exercise, because lows and hypo and hyper lows and high sugars also he can adjust if he has a CGM. I think CGM is very important in some set of patients, those who are taking multiple injections, insulin doses, especially gestational diabetes also. I think Dr. Sunil is one of the experts in GD management, especially who are having a critical illness. Also, I think a continuous monitoring of blood glucose is very important. I think technology part is very good, but it has its own disadvantages, because again, we need to calibrate when it has its below low sugar levels, it has its own disadvantages. But I think in future, we'll see that real-time glucose monitoring, a person sitting in US, he can monitor his father's reading in India. Because through app, I think through phone, we know the real-time glucose, when his sugar is getting low, when his sugar is going high. I think we can remotely monitor, because this COVID pandemic, I think CGM will be a futuristic
management for a diabetic patient. Thank you, Dr. Jayaprakashsai and Dr. Sunil Gupta. I think we're coming to the end of the program. I can keep on asking these questions and we can keep on going for a long period of time. We want to keep it short. And I would like Dr. Sanjay Agarwal to come in and give his final comment and say, nail it to just a couple of points is how important monitoring is for everybody. It's like oxygen. That's what I have. But I can allow Dr. Sanjay to come back and give his final comments. Dr. Sanjay Agarwal, our secretary for RSSDI, please. Thank you very much, Sanjay. I think I was enjoying this entire conversation. और मैं बहुत खुशी से देख रहा था कि किस तरीके से डॉक्टर सुनील गुप्ता, डॉक्टर जया और आप बातचीत कर रहे थे ग्लूकोज मॉनिटरिंग के बारे में. ये एक बहुत अहम चीज़ है हमारे लिए, पेशेंट के तौर पे भी और डॉक्टर के लिए भी, कि पेशेंट्स किस तरीके से अपना ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं. और वही एक जरिया है जिससे हम पहचान सकते हैं कि किसी भी पेशेंट का शुगर कंट्रोल में है या नहीं है. क्योंकि अंत में जो है, अगर आपकी शुगर अच्छी है तो आप बचे हुए रहेंगे आगे के कॉम्प्लिकेशन से. और इसी बारे में ये डिस्कशन चल रहा था इन तीनों के बीच में, जो बहुत अच्छी तरीके से सब पॉइंट्स कवर किया है. डॉक्टर सुनील गुप्ता ने, डॉक्टर जया ने और डॉक्टर संजय रेड्डी ने ये वार्तालाप के बीच में आपको बताया है कि किस तरीके से आप ग्लूकोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कितनी अहमियत होती है शुगर के मॉनिटरिंग के बारे में, और कौन से आज के आधुनिक तरीके हैं शुगर मॉनिटरिंग के लिए. तो मैं यकीनन तौर पे कह सकता हूँ कि जितनी आप जानकारी कहीं से भी मिल सकती है, आज ये शो पे आपको मिली है. और ये 3 एक्सपर्ट्स ने आपको सब इस बारे में जानकारी दी है कि आपने एक ही मैसेज आपको मैं देना चाहूँगा इनके ज़रिए, कि आप सबको एक ग्लूकोमीटर रखना ज़रूरी है. आपको घर में अपनी शुगर मॉनिटर करना ज़रूरी है. और सिर्फ मॉनिटर करके याद रखने में नहीं, आपको लिखना भी चाहिए कि किस तरीके से आप कब मॉनिटर कर रहे हो. क्योंकि अक्सर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरी शुगर 150 थी या 140 थी या 300 थी, उससे हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती. पर किस वक्त आपने करी थी, कितने बार दिन में करी थी, ये सब भी उतनी अहमियत रखती है. क्योंकि हमें अगर अपनी दवाइयों को एडजस्ट करना है तो ये आपकी सुबह कितनी थी, दोपहर कितनी थी, शाम को कितनी थी, रात को कितनी थी, खास करके अगर आप इंसुलिन पे हो तो ये सब हमें जानकारी मिलनी ज़रूरी होती है. और अक्सर हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आधी रात को भी चेक करना ज़रूरी होती है, ताकि नींद में आपकी कितनी शुगर है वो हम पहचान सकें. क्योंकि अक्सर अगर नींद में आपकी शुगर कम हो रही है तो आप जानते नहीं हैं, और कई बार हमने देखा है कि ब्रेन डैमेज हो सकता है अगर आपके नींद में बार-बार जो है शुगर कम हो रही हो तो ये सब चीज़ों के बारे में आप ज़रूर तौर पे आप ध्यान रखिएगा. आपको किसी भी चीज़ की कोई क्वेश्चंस हो कभी भी, तो हम ज़रूर आपके पास हैं. आप हमें से किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप RSSDI को मेल भेज सकते हैं, जिसके ज़रिए हम आपको यकीनन तौर पे जवाब देंगे. ये सारे एक्सपर्ट्स आज जो प्लेटफॉर्म पे रहे हैं, ये आपके क्वेश्चंस के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे. कोई भी आपको क्वेरी हुई या कोई भी जानकारी आपको मालूम करनी हो, ये सब आपके लिए हाजिर है. तो इसके साथ मैं इन तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा RSSDI की तरफ से. बहुत अच्छी आपकी वार्तालाप रही है और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है पेशेंट्स को. और आई एम श्योर कि all these patients are going to take back a lot of messages. I would like to thank Purvi as well as Dr. Farishta for coordinating this entire show. I think they've done an exemplary job. Thank you both of you for putting the show together, and I think it's a very satisfying moment to see the show. Thank you so much. Thank you, Dr. Sanjay Agarwal. Thank you, Dr. Sunil Gupta and Dr. Jayaprakashsai for answering my questions patiently. Thank you, Dr. Purvi and Faraz for allowing me to conduct the show. Thank you, Purvi. Over to you, Dr. Purvi and Faraz, to end the session and I think and take it forward. Yes. I would just like to remind our audience that all these episodes that we run live on Facebook, YouTube, and Instagram from the official RSSDI handles will also be available for future reference on our RSSDI official website. So do visit that, do leave your queries for us, and they will be answered. And what more can I say except a big thank you to all our expert panel today. They are extremely busy practitioners, but like I told you,
they're not just experts in the field, but they are dedicated experts who are very passionate about patient education. So with that, we sign off, Dr. Faraz and myself. And a big thank you on behalf of RSSDI President, Dr. Vasant Kumar, Secretary Dr. Sanjay Agarwal, and the entire EC and the media cell as well. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Dr. very much. Purvi, Dr. Faraj, Yeah, Dr. thank you, Sunil, everyone. Dr. Sanjay. Thank you. Thank very you. much. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Sanjay. Thank you so much. Thank you, Dr. Purvi.